अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रेहान नईम और इस वीडियो में मैं आप लोगों को पाइथन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। पाइथन लैंग्वेज में को डिटेल से देखने से पहले कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स जो है उनको गो थ्रू करना ज़रूरी है। सो बेसिकली कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस, एक ऐसी मशीन है जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस परफॉर्म करने की सलाहियत रखता है विद इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। इसकी एक खूबी ये है कि ये इंसानों की तरह थकावट का शिकार नहीं होता। दूसरी इसकी खूबी ये है कि ये मुख्तलिफ़ तरह के टास्क को एक वक्त में परफॉर्म करने की सलाहियत रखता है और वो उन टास्क को एफिशिएंट तरीके से परफॉर्म करता है, अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स। जिस तरह एक इंसान दूसरे इंसान से जब रब्ता करता है, कम्युनिकेट करता है, तो एक लैंग्वेज का सहारा लेता है, किसी लैंग्वेज के ज़रिए से वो कम्युनिकेट करता है दूसरे इंसान के साथ, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज। बिल्कुल इसी तरह अगर आपने या किसी इंसान ने कंप्यूटर से कोई काम लेना हो, कंप्यूटर से कोई टास्क परफॉर्म करवाना हो, तो कंप्यूटर से उसकी लैंग्वेज में बात करना ज़रूरी है। और कंप्यूटर जो है वो हमारी तरह ना इंग्लिश समझ सकता है, ना उर्दू समझ सकता है, ना अरबिक समझ सकता है, बल्कि वो अपनी ज़ुबान, जिसको कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में या कंप्यूटर साइंस की इस्तिलाह में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, तो वो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ के और समझने के बाद टास्क परफॉर्म करता है। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं डिफरेंट तरह की पूरी दुनिया में यूज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सी लैंग्वेज है, सी शार्प है, जावा है, एंड पाइथन एंड सो ऑन एक्सेट्रा। इंसान के अंदर जो ऑर्गन कंट्रोल करता है दूसरे ऑर्गन्स को, इसी तरह दूसरे जो बॉडी के फंक्शंस हैं, आंखों का देखना, कानों का सुनना, टच करना और इसी तरह चलना फिरना, इन सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने वाला जो मेन ऑर्गन है वो ब्रेन है एक इंसान के अंदर। सेम इसी तरह कंप्यूटर का भी अपना ब्रेन है जिसको सीपीयू कहते हैं, और सीपीयू जो है वो इसका जो ओरिजिनल वर्ड है वो है कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की एब्रिविएशन सीपीयू है। So CPU is the brain of the computer where all the calculations are being performed, and CPU is responsible for coordinating all the tasks that are being performed within the computer, within the computing machine. तो CPU जो है वो सारे टास्क को मैनेज करता है, उनको एक सीक्वेंस के तहत एग्जीक्यूट करता है, और सीपीयू के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, लाइक डीवीडी रोम है या ब्लूटूथ डिवाइस है या वाईफाई डिवाइस है, और भी जितने भी पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, उन सब को कंट्रोल करना, उन सब को मैनेज करना करने वाला काम सीपीयू करता है। So this is the brain of the computer. Another important
element or organ of a computer is memory. So memory जिस तरह एक इंसान के अंदर मेमोरी होती है जहाँ वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, जो कुछ वो देखता है, सुनता है, जो कुछ वो परसीव करता है वो अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करता है। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर जो है उसको दी जाने वाली सारी इंफॉर्मेशंस, इनपुट्स एंड सो ऑन, वो सब कुछ अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करता है। So there are basically two important types of memory inside a computer, that are RAM and ROM. RAM stands for random access memory, and random access memory का वो हिस्सा है जहाँ पे सारी जो कैलकुलेशंस और सारे जो टास्क हैं वो टेम्पोरेरीली स्टोर होते हैं। Whereas read only memory, or in other words ROM, is that part of the memory where information is being stored permanently. पावर सप्लाई अगर पीछे से ऑफ कर दें तो रैम के अंदर मौजूद सारी इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है, ज़ाया हो जाती, वेस्ट हो जाती। जबकि रोम के केस में इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होती। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। So in this video we will be studying Python language, which will be used to communicate with the computer। और पाइथन लैंग्वेज के ज़रिए से हम कंप्यूटर से डिफरेंट तरह के टास्क जो हैं वो परफॉर्म करवा सकते हैं। लाइक मे बी if you want to add two numbers, multiply two numbers, divide two numbers, or store something, or create a GUI, graphical user interface, or recognize an object। तो बहुत सारे टास्क जो हैं वो कंप्यूटर से परफॉर्म करवाए जा सकते हैं, बशर्त ये कि उसकी ज़ुबान में उससे रब्ता किया जाए। सो जिस ज़ुबान से हम कंप्यूटर से रब्ता करेंगे, जिस लैंग्वेज से के ज़रिए से हम कंप्यूटर से रब्ता करेंगे, वो लैंग्वेज जो है वो पाइथन लैंग्वेज कहलाएगी इन दिस वीडियो, इन दिस कोर्स। कंप्यूटर से कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए इसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। सो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस is called program or code or script। ठीक है, in Python language or in any language, a set of instructions is called a program or a code or a script। Now the question is how to डिलीवर दीज इंस्ट्रक्शंस। इन इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर कैसे करें, लिख के डिलीवर करें, बोल के डिलीवर करें, कैसे। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट दी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज यूजुअली रिटन। ये रिटन फॉर्म में ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दी जाती हैं। एंड इन अदर वर्ड्स आई वांट टू से दैट द प्रोग्राम, कोड और स्क्रिप्ट, ये इनको लिखा जाता है, इनको बोला नहीं जाता, इनको लिखा जाता है। तो लिख के आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। एंड द सॉफ्टवेयर विच वी यूज टू राइट दीज इंस्ट्रक्शंस इज Spyder। There are many other softwares present to implement Python language। You can use any one of them, but in this video I will teach you
the basics of Spyder software and how to use it to give instructions to the computer. स्पाइडर सॉफ्टवेयर जो है इसको अब मैं आपके सामने ओपन करता हूँ. स्पाइडर ओके. सो दिस इज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफ द स्पाइडर सॉफ्टवेयर. और इसमें आपको 3 मेन विंडोज नज़र आ रही हैं. एक विंडो ये है, एक विंडो ये है और एक विंडो ये है. ये वो विंडो है जहाँ पे आप अपना कोड या प्रोग्राम लिखेंगे. ये वो विंडो है जहाँ पे आपको प्रोग्राम का आउटपुट नज़र आएगा, प्रोग्राम का रिस्पांस मिलेगा. और इस विंडो को हम अपने फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे, नॉट राइट नाउ. तो अपना पहला प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले आप न्यू फाइल जो है इसको क्रिएट करेंगे. सो न्यू फाइल हैज़ बीन क्रिएटेड. So say for example I want to print a message hello. The command which I will use would be print hello. So print वो कमांड है जो इस मैसेज को आउटपुट विंडो के ऊपर डिस्प्ले करेगा. The next step is to, after writing the instruction, after writing your code, the next step is to save the program. So save the program by any name you want, say my first program, and then click on save button. You can see that the name of the file appears here after saving that file along with the extension .py. अब उसके बाद इस प्ले बटन को आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं प्रोग्राम का आउटपुट कंसोल विंडो पे अपीयर हो चुका है. सो कंग्रेचुलेशंस, यू हैव एग्जीक्यूटेड योर फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज यूजिंग स्पाइडर सॉफ्टवेयर. से फॉर एग्जांपल एक और मैसेज जो है वो मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, प्रिंट WORLD world. So click on this. You can see that hello and world are printed or displayed at the output window. Okay, now note down two things. The first thing to note down is that the message which we want to display is enclosed within double quotation mark. यहाँ पे भी देखें ये double quotation mark है. The second thing to note down is that जो वर्ड है वो हेलो के नीचे प्रिंट हुआ है. वो हेलो के साथ प्रिंट नहीं हुआ एक लाइन में, बल्कि हेलो वाली लाइन से अगली लाइन पे प्रिंट हुआ. सो दिस थिंग इज टू बी नोटेड डाउन. वी कैन प्रिंट वर्ल्ड इन द सेम लाइन इन मैनी वेज. फॉर एग्जाम्पल आप चाहें तो हेलो को के साथ वर्ल्ड लिख के हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सकते हैं एट द सेम लाइन. इफ़ यू वांट टू स्टोर नंबर, से फॉर एग्जांपल इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, अगर आप एक नंबर को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं तो पाइथन लैंग्वेज में या प्रोग्राम में उसको आप कैसे लिखेंगे. आप सबसे पहले एक वेरिएबल का नाम, फिर इक्वल का साइन, और से मैं नंबर 5 जो है वो स्टोर करना चाहता हूँ. सो व्हाट विल हैपन इफ यू रन द प्रोग्राम, what will happen, 5 will be stored in A. After that the word hello will be printed, and after that the word world will be printed at the output. If you want to print the value of the variable, you can write print A, and note down that there is no need to write or put double quotation mark at the left side and right side of variable A.
So click the play button and you can see that variable a has been printed at the output. Similarly, you can create multiple variables like b is equal to 6, c is equal to 8, and you can print all of them. आप सबको print कर सकते हैं. Print b, similarly print c. So click on the play button, all the variables will be printed. Okay, one thing to keep in mind is that whenever a program runs, it starts executing from the top. First it will execute line number 7, then it will execute line number 8, 9 and so on. So the program runs in a sequence. प्रोग्राम जो है वो एक सीक्वेंस के तहत चलता है और टॉप से चलता है, टॉप टू बॉटम रन करता है. Okay, in Python language you can perform different mathematical operations like addition. So 5 plus 6 is 11. You can subtract. So 5 minus 6 minus 1 आता है. You can multiply. 5 into 6 is equal to 30, and you can divide as well. So 5 divided by 8 is equal to 0.83. So this is all for the first video lecture.